नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन्ड बिफोर यू। बच्चों, आई होप you are understanding perimeter and area chapter number 6 of Ganita Prakash grade 6. So today we will be studying page number 140. This one you can see in your textbook, page number 140. And so now we are at our table, or today we'll do page number 140. Page number 140, where these two figures, we'll start with these two figures. So look at the figures below and guess which one of them has a larger area. आपको गेस करना है ये दोनों में से किसका लार्जर एरिया होगा। तो ऐसे देखकर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, by looking at it it's difficult, but when we put it on a squared sheet of paper, इस तरह का पेपर स्क्वायर्ड शीट ऑफ पेपर जहाँ पर 1 यूनिट का एक स्क्वायर्ड पेपर रहता है, इसको ग्राफ पेपर भी बोलते हैं। सो आप वहाँ पर इस फिगर को रख के आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन एस्टिमेट द एरिया ऑफ एनी सिंपल क्लोज शेप बाय यूजिंग अ शीट ऑफ स्क्वायर्ड पेपर और ग्राफ पेपर वेयर एवरी स्क्वायर मेजर्स 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट और 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो हम एरिया किसी भी शीट ऑफ स्क्वायर्ड शीट ऑफ पेपर से निकाल सकते हैं जिसका सारा स्क्वायर सिमिलर हो, बिल्कुल बराबर हो। 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट, ये 1 यूनिट कैन वेरी, 1 यूनिट कैन बी 1 सेंटीमीटर ऑल्सो एंड 1 यूनिट कैन बी 2 सेंटीमीटर ऑल्सो, 3 सेंटीमीटर ऑल्सो। लेकिन कोई भी स्क्वायर्ड शीट होगा उसमें सारा स्क्वायर सेम होगा, तभी वो एरिया निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर का मैंने स्क्वायर्ड शीट लिया है। ओके, सो अभी हम इस शेप को मैंने ऑलरेडी काट कर रखा है यहाँ पर, देखो एग्जैक्टली उसी को मैंने ऐसे कटिंग करके रखा हूँ। ओके, सो अभी हम इसको स्क्वायर्ड शीट ऑफ पेपर के ऊपर में रख कर एंड विल फाइंड आउट द एरिया। उससे पहले हमको जानने का ज़रूरत क्या है। टू एस्टिमेट द एरिया वी कैन ट्रेस ऑन टू अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर एंड प्लेस द सेम ऑन अ पीस ऑफ स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर एंड देन फॉलो द बिलो कन्वेंशंस। तो इसको कट करके या तो इसका ट्रेसिंग कर लीजिए, यू कैन ट्रेस इट आउट आफ्टर कटिंग, और ट्रांसपेरेंट सीट में इसको आप बना कर रख सकते हो। ओके, ट्रांसपेरेंट सीट से भी आप ट्रेस कर सकते हो। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाला क्या है, द एरिया ऑफ 1 फुल स्मॉल स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, जैसे कि ये आपका स्क्वायर्ड सीट है, तो इसका अगर ये पूरा एरिया है, ये पूरा दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा क्लियरली, ये पूरा को हम 1 लेंगे, 1 काउंट करेंगे, पूरा एरिया को 1 काउंट करते हैं, 1 स्क्वायर यूनिट काउंट करेंगे। ओके, लेस देन हाफ, सपोज दिस इज द एरिया, लेस देन हाफ, अगर इस स्क्वायर में सिर्फ इतना ही एरिया कवर है तो ये आधे से कम है, ये आधे से कम है, तो इसको इग्नोर करेंगे, वी हैव टू इग्नोर इफ इट इज लेस देन, इफ द एरिया कवर्ड इज लेस देन हाफ ऑफ द स्क्वायर। नाउ इफ इट इज कवर्ड हाफ, अगर इतना कवर्ड है पूरा तो इसको हाफ काउंट करेंगे, we will count it as half. If it is covered more than half, suppose this much, अगर ये आधा से ज़्यादा ये स्क्वायर कवर्ड है, see this square is covered more than half, तो इसको 1 स्क्वायर यूनिट काउंट करेंगे। ओके, इस हिसाब से हम
एरिया निकालेंगे इसका, जो भी शेप है उसका आउटलाइन करने के बाद में स्क्वायर्स को ऐसे काउंट करना है। फुल स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर यूनिट, लेस देन हाफ स्क्वायर है तो इग्नोर करेंगे, हाफ स्क्वायर है एग्जैक्टली हाफ है तो हाफ स्क्वायर यूनिट काउंट करेंगे। ओके, एंड लेस देन हाफ, मोर देन हाफ स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर यूनिट काउंट करेंगे। यही इन चारों पॉइंट्स में बताया हुआ है। ओके, तो अभी हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये मूव ना करे। एंड इसका एरिया भी ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये दोनों एरिया को ट्रेस कर लिया। ये है, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। ओके, अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे फुल स्क्वायर्स कितना है इस फिगर में। फुल स्क्वायर है 1 1 2 3, this is also full 4, so 1 2 3 4, full square means 4 square units, 4 square unit. now half, less than half square ये covered है, ये वाला portion, तो इसको इग्नोर करेंगे। दिस इज ऑल्सो लेस देन हाफ, इसको इग्नोर करेंगे। दिस इज ऑल्सो नो, दिस इज मोर देन हाफ, दिस इज मोर देन हाफ, दिस इज ऑल्सो लेस देन हाफ, इसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने वाला पोर्शंस को मैं पर्पल कलर से दिखाता हूँ। इसको इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना है, एंड इसको इग्नोर करना है। इसको, दिस इज ऑल्सो लेस देन हाफ, इसको इग्नोर करना है। इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। देन दिस इज मोर देन हाफ, दिस इज लेस देन हाफ, इसको इग्नोर करना है। इसको इग्नोर करना है, एंड इसको इग्नोर करना है, बिकॉज दिस ऑल आर लेस देन हाफ। मैंने यहाँ क्या बताया, अगर लेस देन हाफ एरिया कवर्ड है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। ओके, दैट्स वाई वी आर इग्नोरिंग, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अभी जो मोर देन हाफ है या एग्जैक्टली हाफ है वो देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली हाफ तो कोई भी नहीं दिख रहा है इसमें, बट मोर देन हाफ है। मोर देन हाफ कितना है? 1 2 3 4 5 and 6, so 6 more than half है। so how many more than half squares covered are there? 6 square units, so we will take 1 unit for that. If it is more than half, we will take it as 1 square unit. I have written here, here you can see more than half means 1 square unit. So total area of this is 6 plus 4, 10 square unit. Okay, so total area of this figure according to this sheet of paper. अब ये अगर आप दूसरा स्क्वायर्ड शीट पेपर लेते हो या दूसरा यूनिट पेपर लेते हो, दूसरा स्क्वायर यूनिट पेपर लेते हो, इस पेपर का प्लेस में आपने दूसरा पेपर लिया, सपोज ये पेपर है, इस प्लेस के बदले में आपने दूसरा पेपर लिया जिसका कि यूनिट्स बड़ा बड़ा है, तो उसमें डिफरेंट एरिया आएगा, बिकॉज उसका पर स्क्वायर यूनिट इज साइज इज डिफरेंट। दिस स्क्वायर पर यूनिट साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर, सो उसके हिसाब से इसका 10 स्क्वायर यूनिट आएगा। ओके, नाउ वी विल सी दिस फिगर। इन दिस फिगर how many full squares are there? This is 1 is full square, this 2 is full square, this is not full square, so 2 full squares are there. So what we can take 2 square units of full square. Now we will see how many less than half squares are there.
this area is less than half a square, this area is less than half a square, this area is approximately half, so we will take it as half. This area is less than half a square, and this area is also more than half a square, this area is also approximately half, means this is half, this area is also less than 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 half. So now half square half is this is approximately half, and this is approximately, you can say, half. This is half, half. So there are half to half 1 square unit is taken as half, and again half 1 square, so 2 half square unit will become 1 square unit. Okay. Now more than half square units, how many? 1, 2, 3, 4, 5, then 6, then 7, then 8. There are 8 square units which are more than half. So if it is more than half, we have to take as 1. If it is less than half, we are ignoring. And if it is approximately half, we are taking it as half. So total how many units will be, square units will be the area of figure B? 8 plus 1, 9 plus 2, 11 square units. 11 square units will be the area of figure B. So according to question, which of one of them has a larger area? So we can clearly see the area of figure B is larger than area of figure A. I hope it is clear to you. Area of figure B is 11 square units, area of figure A is 10 square units. Therefore we can write, therefore area of figure B is greater than area of figure A. Okay. Now next question is, we have to find the area of following figures. Okay. So in this we have to find the area of these figures. So there are 4 figures, 1, 2, 3 and 4. So I have taken a cutting of that figure, and we will find out one by one the area of each figure. We have to find out the area, so we will join the dots and make it square. So we have to find out full square and half square. We will join the dots of each one. So these all will be 1 square unit. Okay. These all are equal square units. So equal units, so we can consider it as square units. So we will join the dots and then we will find out the area. It will be more easier. Okay. Only dots which are inside the figure. So we have joined all the dots. I hope it is clear to you. I hope it is clear to you. So in this
as you can see here, how many full squares are there in figure 1. So we will take one by one. For figure 1, suppose this is 1, this one is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. In figure 1, how many full squares are there? 1, 2, 3. 1, 2 and 3. 3 full squares and 1 and 2 half squares. 2 half squares. 2 half squares. Okay. 3 full squares means 3 square units. We will take as 1. 3 square units. And 2 half square units means 1 square unit. Two half square units means half into half plus half. Half plus half, आधा आधा कितना होता है? So half plus half will be 1. आधा आधा एक होता है, तो ये second 2 half squares will become 1 square unit. So total area of figure 1 will be 4 square unit. In figure 2 how many full squares are there? देखो यहाँ पर figure 2 में कितना full squares है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in 6 full squares means 6 square units. So how many half square units in figure 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 half square units. So in figure 2 there are 6 half squares are there. 6 half squares means 3 square units. उसका आधा हो जाएगा. So क्योंकि 2 हाफ स्क्वायर मिलके 1 स्क्वायर बनाता है, एक हाफ स्क्वायर को हाफ ही काउंट करते हैं. 6 + 3 9 square units. Okay. Now in figure 3 you can see, in figure 3 how many full square units are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अच्छा, इसमें लेस देन हाफ स्क्वायर और मोर देन हाफ स्क्वायर यूनिट्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये डायगोनली कट हो रहा है. यहाँ पर जो फिगर्स है वो इस तरह से बनाए हुए है कि जो हाफ है वो डायगोनली कट हो रहा है, मतलब ये जो स्क्वायर यूनिट को पूरा हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए हम इसको हाफ काउंट कर रहे हैं. ठीक है. सो इसमें हाफ स्क्वायर यूनिट कितना हो जाएगा? फुल स्क्वायर यूनिट कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो इन फिगर 3 there are 7 full squares, means 7 square units. Okay. And how many half square units are there? Half squares, how many half squares are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. So 6 half squares means 3 square units. So 7 plus 3 will be 10 square units. So figure 3 का 10 square units area हो जाएगा. Okay. Now figure 4, we will see figure 4. In figure 4 कितना full square units है देखो ध्यान से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फुल स्क्वायर है. एंड इसमें हाफ स्क्वायर्स कितना है? ये बीच का हमने डॉट्स को ज्वाइन नहीं किया, अभी इससे क्लियर होगा आपको. सो 8 फुल स्क्वायर्स है.
8 full squares. 8 full squares means 8 square units. नाउ हाफ स्क्वायर यूनिट्स कितना है, ये एक 1 हो गया, ये एक 2 हो गया, ये एक 3 हो गया, 4 5 6 6 half squares are there in this figure. Okay, 6 half squares. So 6 half squares. 6 हाफ स्क्वायर्स कितना हो जाएगा, कितना के बराबर हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि 2 हाफ स्क्वायर 1 स्क्वायर यूनिट बनाता है. 8 9 10 11 11 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो जाएगा. फिगर 4 का 11 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो जाएगा. सो हमने देखा कि कैसे शेप्स का एरिया किसी भी स्क्वायर यूनिट्स में के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अभी आपने बहुत अच्छे से डिटेल में सीख लिया. अभी हम अपने बोर्ड की तरफ मूव करेंगे. So dear children, I hope you liked the video. See you in the next video. Till then, namaskar, jai hind, and don't forget to subscribe and like and hit the bell icon so that you can get my next video as soon as possible. We will meet up in the next video. Thank you very much. Bye.